नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम कमलेश मेहता आंटी जी की पुस्तक द फ्लावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की रीडिंग सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं इससे पहले एक सूचना गुरु संगत को देना चाहता हूं कि गुरु जी की असीम कृपा से, गुरु जी के असीम आशीर्वाद से शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल टीम सेवादारों ने नरेंद्र ढांड अंकल जी की पुस्तक द मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ का अनुवाद 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में किया है, जो कि हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, स्पेनिश और पंजाबी। मूल पुस्तक इंग्लिश भाषा में थी, जो कि हमें ढांड अंकल द्वारा प्रोवाइड की गई थी। आज 5:30 बजे हिंदी की जो ट्रांसलेशन है वो हमको मिली, जो कि जापान से हमारी रिंकी भाटिया आंटी जी ने बहुत मेहनत से उसको पूरा करके हमको भेजा। ये गुरु जी की असीम कृपा है कि कल से सेशन स्टार्ट है और आज शाम को हमें हिंदी की मूल पुस्तक मिली है। तो इस विषय में मैं नरेंद्र ढांड अंकल जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि समूचे ट्रांसलेटर्स और जो मल्टीलिंगुअल टीम है उनके लिए 2 शब्द कहें। ओवर टू यू ढांड अंकल। जय गुरु जी। एक मिनट अंकल, मुझे आना पड़ेगा दोबारा। होस्ट ढांड अंकल को दोबारा होस्ट बना दें प्लीज, एज सून एज ही जॉइंस। हाँ जी, थैंक यू अंकल। कहते हैं ना कि गुरु जी की लीला बड़ी अपरंपार है, और कहते हैं ना कि सेवा वो किसको क्या किस समय बरतने उन्होंने देनी है, वो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। तो ये गुरु जी के टाइम पे होता था कि किससे काम किसको करवाना है, किसको सेवा बख्शनी है, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी भी 6 या 7 लैंग्वेज में बुक ये ट्रांसलेट होगी। तो कहते हैं ना, सुरेश अंकल से मेरे ख्याल से हमें 1.25 साल या 1.5 साल पहले हम लोगों की फोन के ऊपर बात हुई और बुक के बारे में बात हुई कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे मेरे से बुक लिखवाई थी। तो गुरुजी ने मिलवाने के बाद अभी कुछ टाइम से सुरेश अंकल ने इनिशिएट लिया। ये गुरुजी की महिमा थी कि उन्होंने जो काम करवाना था वो सुरेश अंकल के थ्रू करवाना था। शायद मैं, अगर मुझे खुद करवाना होता शायद मैं कभी भी ना करवा सकता इस चीज को। तो उन्होंने सुरेश अंकल के थ्रू करवा के ट्रांसलेटर उन्होंने ढूंढे, आगे जिन्होंने बोलना है राइटर रीडर है वो उन्होंने ढूंढे हैं। तो आई एम रियली थैंक्स टू ऑल, टू सुरेश अंकल एज वेल एज द ट्रांसलेटर एज वेल एज रीडर जिन्होंने भी करना है। तो मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये सब गुरु जी की लीला है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि उन मैं तो गुरु जी से यही अरदास करूंगा कि गुरु जी सुरेश अंकल और जिन्होंने ट्रांसलेटर किया है और जिन्होंने रीड करना है उनके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाते रखें। थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू नरेंद्र अंकल। गुरु जी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं कमलेश मेहता आंटी जी का स्वागत करता हूं। ओवर टू यू कमलेश मेहता आंटी जी। ओवर टू यू नीरज अरोड़ा आंटी। नीरज अरोड़ा आंटी, ओवर टू यू प्लीज।
Jai Guruji, can you hear me? Suresh Uncle ji. You are audible, Aunty. Okay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर we are here to read the marvelous book written by Kamlesh Aunty ji, and we are fortunate to have Kamlesh Aunty ji here with us also tonight. And before moving forward, may I request Aunty ji to please unmute yourself and say a few words to the Sangat who has gathered here to take the blessings of this satsang. Over to you, Kamlesh Aunty ji. Jai Guruji. Jai Guruji, Aunty ji, we can hear you. Guruji ka koti koti pranam. And for Guruji giving me this platform through Suresh Uncle. I'm so honored that I'm the part of this group. And I'm really blessed that my journey with Guruji is reaching so many people. And I'm really blessed from Guruji that he has given me this opportunity to reach out his Sangat. All my thoughts, all my things I have put into the book. I really shared every bit in it from the day I joined Guruji. And I'm so happy that this book has come out and people will read after I'm dead and gone. At least the new Sangat, which is joined later, will have the first-hand knowledge of everything, all the Sangats. Jai Guruji. Please, Aunty, continue. Thank you, Kamlesh Aunty ji. And it's when we have been reading these chapters for some weeks now, and it's always a pleasure when you are there with us, and these are the words we can hear God, we can hear Guruji through the writings, the document that you have, the way you have documented for us, especially those who have not had the good chance of meeting Guruji during his, when he was in his bodily form. And as you said, that these words are going to help us for many, many years to come. And we really wish that Guruji blesses you with a very happy and healthy and long, long life. And so you are with us when we are reading this in the times to come. And Sangat ji, we are here at the Shukrana Guru Maharaj Multilingual platform, and with the immense blessings of our Pyare Guruji Maharaj, we are here to continue the recitation of the sessions of the various chapters of the Flowers of Gratitude, which has been written by our blessed Kamlesh Mehta Aunty ji, who was Guruji's lifetime Sangat. Today's recitation is by Seema Malik Aunty ji. I invite her to begin reading, and Seema Malik Aunty will be reading on the topic Guruji Saves You from the Crisis, pages 32 to 34 of the book The Flowers of Gratitude. Over to you, Seema Malik Aunty ji. Seema Malik Aunty ji, are you there?
I think I saw your name. Seema Malik Aunty ji, are you there? Yes, you can raise your hand. Ask to unmute. Admin ji, please unmute. Yes. Over to Yes, you. Over to you. I hope I'm audible now. Yes, you are. Yes, you are. Kindly proceed. जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज अपॉर्चुनिटी दी है मुझे। बहुत ही immensely blessed and beautiful संगत कमलेश आंटी जी। I welcome you, Aunty, and all the respected Sangat of the Multilingual group to come and hear the chapter Guruji saves you from the crisis, from the very, very blessed book, The Flowers of Gratitude, from pages 32 to 34. Guruji saves you from the crisis. Do your best, then surrender to the divine will. It begins from this sentence. Very beautifully written sentence, very well thought. What I can say is, I still remember from our school days, हमें यही कहा जाता था कि हमें अपनी सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से उसको स्टडी करना है और फिर एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हम लिख सकते हैं लिखें, सरेंडर कर दें और जो भी होगा अच्छा होगा. This is what I have learned from my school days, and our benign, our blessed Guruji has blessed us with his so simple teachings to begin with. I continue. This is one incident that reinforced my faith and belief in Guruji, that he can sense the dangers in your life and would stand in its way to save you. He becomes a shield to protect you. कमलेश आंटी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब उनको ये महसूस हुआ, जब उनको ये विश्वास हुआ कि गुरुजी को हमारी पल पल की खबर होती है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और हमारी लाइफ का अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ये सब कुछ गुरुजी को पता होता है. और इसीलिए गुरु साहिब हमें हर पल हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं. This incident happened like this. As I was a regular visitor to Guruji's Sangat, and I never missed an opportunity to visit whenever I could. I feel Auntie has been very, very blessed, and all that Sangat who had met Guruji in his physical form, when they could have the real darshan of Guru Sahib in their own lifetime. And actually nobody wanted to miss. कोई भी opportunity कोई miss नहीं करना चाहता था. और आंटी ने बिल्कुल सच ये कहा है कि उनका भी दिल यही चाहता था कि वो हर समय जितना भी हो सके गुरु साहिब की संगत में वो बैठे. This time also, when my uncle boarded the flight to Canada, I had a longing to visit Guruji, and I went to Jalandhar straight after the flight to be with divine Guruji. और ये सच ऐसा ही होता है कि जब आंटी के अंकल जैसे ही उन्होंने फ्लाइट ली कनाडा जाने के लिए, तो उनका दिल अंदर से बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था गुरु साहिब से मिलने के लिए.
और बिना किसी क्षण को गंवाए उन्होंने बिल्कुल सीधा जालंधर की तरफ वो चली गई गुरु साहिब जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन, उनके सानिध्य में बैठने के लिए। With my medical reports, I went to Guruji. The moment I saw Guruji, I caught his legs and feet and cried my heart out. I can understand जब मेडिकल रिपोर्ट्स की जब हम वेट कर रहे होते हैं और जब वो रिपोर्ट्स वैसी आती हैं जो शायद हमारे लिए बहुत बुरी होती हैं, तो हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हम अपने बड़ों के पास जाएं, हम अपने गुरु के पास जाएं, हम अपने ईश्वर के सामने जाके अपने दिल का गुबार निकालें, जो कमलेश आंटी ने किया। Guruji, my children are small, they need me, I said. गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। गुरुजी said, don't worry, nothing would happen. और गुरुजी ने बिल्कुल इतनी सिंपल वे में शांत स्वभाव से होकर कहा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ये दो शब्द मैं समझ सकती हूँ जब यही हाल मेरे साथ हुआ, जब 2019 में मुझे अचानक से 8 मार्च को हार्ट अटैक आया। बिल्कुल हेल एंड हार्टी, कोई दिक्कत नहीं, जो एक नॉर्मल रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं बस वही आ रही थी, लेकिन हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं समझ आ रहा था। मैं समझ सकती हूँ उस रात को, वो पल, हर एक पल जब मेरे पसीने पसीने हो चुकी थी, मेरा पूरा जॉ लाइन, इट वाज jammed. I was having shooting pains in my heart and I just could not control myself. I cried out myself. मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, तो मेरा दिल अंदर से चीख रहा था, गुरुजी, गुरुजी कुछ करिए, कुछ करो गुरुजी, संभाल लो मुझे, आपकी बेटी जा रही है, मैं मरना नहीं चाहती, अभी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, या तो मुझे बचा लो गुरुजी, या मुझे एक क्षण में अपने चरणों में बुला लो। मैं समझ सकती हूँ जब कमलेश आंटी के वो क्या फीलिंग्स रही होंगी जब उन्होंने ये बातें गुरुजी को बताई। एंड हाउ गुरुजी in a very, very relaxed, in a very, very confident manner, he has consoled Aunty that nothing would happen. Just don't worry. And the same thing happened with me, Sangatji. The same thing happened with me. I continue. Guruji said, don't worry, nothing would happen. Guruji, I have a heart disease and my one pulmonary and one ventricle is half blocked. Kamlesh Aunty said कि उनको ये उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्हें दिल की बीमारी है, जिसके अंदर उनकी एक पल्मोनरी और एक वेंट्रिकल आदि ब्लॉक थी। संगत जी, मैं अभी भी रिकॉल कर पा रही हूँ अपने उस टाइम को, जब सेम इवनिंग सुबह 3 बजे ये मुझे हार्ट अटैक आया, और जब मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, मुझे चेक किया गया, तो 90% ब्लॉकेज शाम तक, जब मुझे पता चला कि 90% मेरी ब्लॉकेज। I was really, really afraid. I was very much fearful. मैं समझ सकती हूँ कमलेश आंटी, आपने कितना 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 फील किया होगा उस टाइम पे, जब जान निकल रही होती है, जब परिवार सामने नजर आता है, तब क्या फील होता है।
I continue. I stayed there for some time. Now it was time to go. I took Guruji's permission to leave. Strangely, Guruji told me to wait and leave after half an hour. मैं वहां कुछ देर रुकी, कमलेश आंटी कहती हैं, क्योंकि अब टाइम था जाने का, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली जाने के लिए। लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि आप रुकें और अभी आधे घंटा के बाद जाना। I couldn't understand, but still I waited for half an hour. So auntie says, वो नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं उन्हें रुकने के लिए। बच्चों की गुरुजी की आज्ञा नहीं थी जाने के लिए, तो वो वेट किया उन्होंने एक पूरा आधा घंटा। After an hour, I took permission and left for my home. और 1 घंटे के बाद कमलेश आंटी जी ने आज्ञा ली गुरु साहिब से और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। As we reached Karnal, we saw a huge bus accident there. जैसे ही करनाल पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा बस का एक्सीडेंट हुआ था। A bus had toppled upside down. जो बस थी वो उल्टी हो चुकी थी। To my surprise, it was the same bus I had decided to board a few hours ago that Guruji didn't allow. आंटी कहती हैं कि उनको बहुत हैरानगी हुई कि अरे ये तो वही बस है जो उन्होंने कुछ घंटे पहले सोचा था कि वो उसको लेके अपने घर को जाएंगे और जिसके लिए गुरु साहिब जी ने उनको आज्ञा नहीं दी। संगत जी, as I understand, there were two major things that auntie was going through. One, she was aware, as the medical reports had stated so, about a heart disease, which was again a very, very terrifying moment for her. And the next incident where the bus had toppled, which she wasn't aware why Guru Sahib Ji has asked her to wait and not to leave. And this is where we say, we go to the astrologers, they can only tell us what is going to happen in the future. वो सिर्फ देखकर बता सकते हैं पंडित ज्योतिषी कि हमारे साथ आगे क्या होना है, लेकिन उस लेख को बदलने वाले वो सिर्फ वो ईश्वर हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो गुरुजी साहिब हैं। इसीलिए इसमें एक मैसेजेस बहुत अच्छे जो मुझे समझ में आए कि एक, जो हम शारीरिक रोग दुख को हम जब अंडरगो करते हैं, हम झेलते हैं इस दुनियावी संसार में, वो हमें चीजें रिपोर्ट्स में आज पता लगे या बाद में पता लगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें अगले पल का नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या कुछ हो जाए। और यहीं पर ही हमारा विश्वास और उम्मीद हमें रखनी चाहिए अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज साथ चलती है, वो है गुरु। संग सहाय सिर्फ गुरु होता है। अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर हम
ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जब हम लाचार हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे परिवार के लोग कुछ नहीं कर पाते, हमारे सगे संबंधी कुछ नहीं कर पाते, हम अपने आप भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस टाइम पे हमारी ये भी हालात नहीं होती है कि हम अपने लिए भी जाप कर सके, हम अपने गुरु को याद कर सके, हम इस लायक भी नहीं रह पाते। तो उस टाइम कौन होता है? उस टाइम कौन होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे परमात्मा, हमारी गुरु साहिब। मैं भावुक हो गई, संगत जी माफ करना। याद आ गया अपना उस समय को कि जब मैं इस लायक नहीं थी कि मैं कुछ अपने लिए भी प्रार्थना कर सकूं। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर गुरु जी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप गुरु जी बिल्कुल आंखों में देख रहे हैं मेरे। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ और उनका हाथ अपनी चीक्स के ऊपर, अपने गालों के ऊपर, कि वो ये कह रहे हैं, तू क्या सोचती है? व्हाट डू यू थिंक? डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। तू सिर्फ मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं कर रहा हूँ, तेरे लिए पाठ मैं कर रहा हूँ। तू बस मुझे याद रख, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन स्वरूप ऑफ गुरु साहिब, जो मुझे परसों सुबह बार बार मेरी आंखों के सामने अमृत वेला सत्संग में मैं संगत जी गई हुई थी, और यही स्वरूप गुरु जी का मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा था, शायद ब्लेसिंग्स देने के लिए कि आज जो मैं इतनी डिवाइन द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का ये लेसन पढ़ रही हूँ, ये चैप्टर पढ़ रही हूँ। और ये सच में ये मेरे सामने ये लेसन रीडिंग के लिए इस तब आया when actually I am going through that crisis. I am going through another crisis of my life. क्योंकि जब तक लाइफ है, क्राइसिस जिंदगी में बने रहते हैं, स्ट्रगल्स बनी रहती हैं। The only reinforcement is our faith and hope in Guruji's will, that he is there for us, he is there forever. वो कहते हैं ना कि हम भूल जाएं, गुरुजी आप मत हमें भूलना, हम इस लायक नहीं हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, और आप, हम बुल्लनहार हैं और बख्शनहार हैं। ऑन अ लाइटर नोट, संगत जी, अभी 2 दिन पहले मैं उल्टा बोल रही थी कि मैं बख्शनहार तो बुल्लनहार, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ ही मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर मैंने अपने आप को सर पे एक थप्पड़ मारा, और फिर मैंने कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर देना, और गुरुजी ने मुझसे बोला, चल पगली। इस तरीके से गुरुजी बात करते हैं, इतने प्यार से हमें समझाते हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गुरुजी। पेज नंबर 34, I continue. My life was saved by Guruji that day. It was Guruji who delayed my plan for an hour to save my life. कमलेश आंटी कहती हैं कि उनका वो बाल बाल बची उस दिन। गुरुजी ने उनका बचाव किया, अपने पास बिठाकर 1 घंटा डिले करा के। जो उनकी डेस्टिनी में लिखा था कुछ और, गुरुजी ने उसको, उस पन्ने को काट के, उस पन्ने को निकाल कर एक नया पन्ना अपने हाथों से, अपने कलम से लिख दिया। शुक्राना ऐसे गुरु का, मैं बलिहारी जाऊं ऐसे गुरु के। I continue. So, if you surrender to Guruji, he will take care of you and save you from any unwanted incidents in life. Have faith in Guru.
Have faith in your Guru. जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ का मतलब सब कुछ, अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। गुरुजी कहते थे, जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने दिमाग को जूतों के साथ रखकर आया करो बाहर। जब गुरु के पास आते हैं तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? उस गुरु के पास who takes away 90% of our karmas on him, and we have to just suffer 10%, and that too, Sangaji, I've seen a time comes when I'm 100% sure so many of us have experienced that not even 90% we have to suffer. Many a times our Guru Sahib Ji takes over complete 100% of our karmas upon him. But then, before he does that, he cleans her thoroughly. He cleanses us. हमारे भांडे को वो साफ करते हैं अंदर से, कुम्हार की तरह अंदर से ठोकते हैं, पीटते हैं, ऊपर से उसको निकालते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, अंदर से अपना साथ देते रहते हैं। बहुत शुक्राना गुरु जी का। A man, I continue, that's a quote. A man must have faith in the Guru's words. A man must have faith in the Guru's words. He succeeds in spiritual life by looking on his Guru as God himself. Unquote. कमलेश आंटी ने बहुत सुंदर तरीके से इस चैप्टर को समराइज किया है कि हमें अपने गुरु के शब्दों पर, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। और ये आज भी उतना ही सच है जितना गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। मुझे आज भी याद है कि जब किस तरीके से मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली, जब मुझे गुरुजी ने अपने पास अपने दर्शनों के लिए बुलाया। मैं नहीं जानती थी गुरुजी को, लेकिन हाँ, मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि मैं एक गुरु की तलाश में हूँ और मेरी जिंदगी का एम, मेरी पूरी लाइफ का एम गुरु की तलाश थी। And perhaps, why should I say perhaps? He knew it, that my life's aim was the search of a guru, search of a true guru. And he had called me and he had given me his divine darshan. But then again, वो डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। अभी भांडा साफ नहीं था, अभी मेरा वक्त नहीं आया था। I had yet to realize the worth of a true guru. However, I was and have been a devotee of Lord Shiva throughout. And I had always prayed for the well-being of all and everyone. Perhaps ये बातें बाद में पता चली कि सरबत का भला के बारे में हमें बोलना चाहिए। गुरु साहिब जी इससे बहुत खुश होते हैं। And after my meeting with Guru Sahib Ji, my life completely changed without realizing that it was Guru Sahib Ji's presence that I was called and blessed by him. With whatever I could think, I could achieve that.
Much later, I realized in 2015 that it was nothing else but His divine presence that He had blessed me with. And His words, I do not remember what He had said, but I am very much sure, Sangaji, that He must have said Kalyan Kitta, because thereafter, after meeting Him, my life changed. My life became so positive, and I used to tell everyone that God is very kind. God is very kind. I never used to realize, in fact realized it was Guru Sahib Ji who had called me, and that is the reason, because destiny had otherwise many struggles for me. My karmic account was still there. So once I realized, that was 2015, Sangat Ji, and that's a time when I slowly started going to Bade Mandir and understanding. I will not say that I still understood completely. No one can understand Guru Sahib Ji. But I started understanding bit by bit. From the Sangat's words, ye Guru ke upar vishwas rakho, with their testimonials, I started believing more and more in Guru Sahib Ji's words. And since 2015 until date, the time is there when I feel, not that I can say that I've completely surrendered, because then it becomes very, it takes time to surrender. It takes time. But yes, whenever I have left everything to Guru Sahib Ji, even without realizing, He answers my वो कहते हैं ना, बिन बोले सब जानता. I don't have to seek any answers. I receive the answers before any question comes in my mind, before any anxiety comes to me. He's always there. And this is how I've had a growth in my spiritual life, truly blessed by a true Guru, none other than Guru Sahib Ji, who is not only a Guru, my God, my Mahadev, who not only gives me his divine darshan in my visions each and every day whenever I sit with him, which reinforces my faith in him. Now the tears that earlier I used to cry because of the miseries that I was undergoing, but now these tears that fall from my eyes are the tears of joy, the tears of Amrit. And now with this quote, Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, Sangatji. Sangatji, I personally feel the assigned pages have been read by Aunty. Aunty, I think two more yes, I have participants are waiting for their turn. Thank you very much. May I request Seema Kumar Aunty, please unmute yourself. Seema Kumar Aunty ji. Jai Guruji, am I audible, Uncle? Yes, Aunty, you're audible. Okay. Thank you very much. Jai Guruji Maharaj, and with Jai Guruji Kamlesh Mehta Aunty, Multilingual Group, Suresh Vasan Uncle, और सब संगत, अभी सीमा मलिक आंटी ने बोला, सबको मेरी वंदना.
और कमलेश मेहता आंटी, आपके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, because I have missed you in in earlier sessions, and Guruji blesses you in abundance. आपके लिए 2 शब्द की लाइन, जिन सदगुरु प्यारा देखिया तिनको हो वारी, जिनने की थी गुरु की चाकरी तिन सद बलिहारी। तो आंटी, हम आपके ऊपर सब बलिहारी हैं कि आपने हमारे गुरुजी महाराज की सेवा करी, आपने उनके चरण दबाए, आपने उनके दर्शन करे। सो माय फॉरएवर इन ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो कि आपने हमको गुरु जी का जलवा दिखाया अपनी किताब से, अपने सत्संग से, उसके माध्यम से, और बाकी सब संगत के माध्यम से हमने गुरुजी को जाना। क्योंकि मैं एक नई संगत हूँ, मुझे 3 साल सिर्फ जुड़े हुए हो गए। और आंटी, नाउ I'll only quote 2 points from this chapter, which are very spiritual. You know, your one-line sentences have very deep meanings. This is what I have learned, you know. And the first line you said that, do your best, then surrender to the divine will. So my take is on this is, do your best in whatever you are doing and don't seek for results or fruits. Do not expect anything but be in total surrender to the will of God. Nature wants to know your intention and it knows you, you've given your best and your heart is in the right place. अब कहते हैं जैसे एक डॉग है, वो अपनी जब टेल वैग करता है, उसकी टेल कैसे वैग होती है, कभी ऊंची नीची, it does not matter, because he has love for his master and it only knows how to love his master. So doing your best with good intentions is above intelligence, result, everything else is statistics. अब जैसे कहते हैं, give your life the best shot and then accept gracefully whatever God has in store for us with total surrender. God has only purity of prayer rather than the prayers. So intention is bigger than intelligence, effort and result. अब देखिए, इसको मैं थोड़ा हिंदी में करूंगी क्योंकि कुछ संगत को दे लाइक टू हेयर इन हिंदी। तो आप जो भी कार्य करें उसको अच्छी नियत और सर्वश्रेष्ठ करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम अच्छा कार्य करें अपने गुरु जी के लिए और अपनी तरफ से, और परिणाम का ना सोचें। और ईश्वर हमारे मन के भाव को जानते हैं, ना कि परिणाम को। हमारा हृदय अगर सही स्थान पर होगा तो बाकी सब सिर्फ फिगर्स रह जाती हैं। गुरु प्रार्थना का भाव देखते हैं, ना कि प्रार्थना को, और ना ही वो बड़े वर्ड्स को, अल्फाज को देखते हैं। हमारे कहते हैं, गुरुजी कहते थे, संत भाव का भूखा है। तो ये हम हमारे गुरुजी हमारा भाव देखते हैं। और ईश्वर से ये अरदास है कि हमें आप इतना ज्ञान दीजिए कि हम जीवन को अच्छे कर्म करके जिए और जो मिले उसे स्वीकार करें। अब आंटी, आपने बोला he becomes a shield to protect you. He saved you through many illnesses, accidents, and saved your life and gave you peace of mind. I also have many experiences which I will not go here, that he has saved many times my life and given me only 10%. And who can do it? Only Mahashiv Park Brahm can do it. And I have very deep satsangs on them, which will take a lot of time, so I will not go on that. So your third point you end with, which is very beautiful again, and I want to, elaborate on that. And it's only through your teachings, your books, your satsangs I have learned. My journey has been only through listening to satsangs. जो गुरुजी कहते थे सत्संग की महिमा, वो मैंने जानी है। जो मेरी जर्नी है वो गुरुजी के सिर्फ सत्संग सुनने से हुई है। आंटी, आपने बोला, have faith in Guru's words. Devotee succeeds in spiritual life by looking on his Guru as God himself. So this is faith. Now, what is faith? My take on faith is an anchor to go through life. आपके अंदर faith होगा, विश्वास होगा, then you can carry with your life. Our faith should be so strong that even our Guru gets shaken by it. हमें अपने गुरु जी में इतना faith रखना है कि वो भी, उनको भी लगे कि हम उनके शिष्य हैं. How we can do that? How we can do that? My take is, become a good human being. Do not harm others. Do not wield power of position, words, or status. No gossiping, abusing. Earn money in right way. Do charity.
feel the pain of others. And pain is the biggest, blessing. When we get pain, then we realize how others feel. And the best part I can say on this is, faith is walk on the path of light, quietly, humbly, and in positive surrender. And give your soul to your master. अब क्या है faith? क्या है? Faith is heartbeat which keeps the soul pure and intact in spite of difficulties in life. कहते हैं ना, विश्वास से हमारा जीवन चलता है. हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम हिले ना. हमारी नींव इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आत्मा शरीर, कि हम मन को, हमें अपने गुरु को समर्पित करना है. And Auntie, faith, I feel the faith, I never knew the meaning of this surrender. I am still learning, because surrender is a very big thing. I put faith in 3 categories with Guruji. The first faith is which breaks easily. देखिए हमारी life में कोई problems आती हैं, we start questioning, though we have faith that Guruji will do it, but we start questioning God and Guruji, why it is happening to us. ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? And जब हमारा काम पूरा नहीं होता और we have to face some adversity, हमारा faith break होने लग जाता है. So who are we? We are young souls. We are good. We have good intentions. हम गुरुजी के भगत हैं, पर हमारे अंदर इतनी अभी maturity नहीं हमारी soul में आई है कि हम ये इस pains को accept कर सकें. As we should understand that our life is a life of karmas. जो हमारे कर्म हैं वो हमको काटने हैं, and this is what when the pain comes. And जैसे कहते हैं कोई कष्ट या दुख आता है तो हम ईश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये दुख क्यों मिला, और हमारा विश्वास टूटने लगता है बिना समझे कि कर्मों का खेल है. हमारे भविष्य के लिए भी शायद ये ठीक ना हो जो हमें प्रॉब्लम आई है. जैसे गुरुजी कहते थे कि मुझे पता है कि आगे क्या है, आप जो अभी मांगते हैं वो आपके लिए शायद ठीक ना हो, जो हमें अभी लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, और वो शायद आगे जाके वो हमारे लिए ठीक नहीं था. और गुरु knows everything. So these are young souls. The other faith is that is they feel they have ultimate faith and will never be let down, and they believe in miracles of Guruji, and they feel that everything is possible and guaranteed. They do not get upset with tough times like illness and other things, and they know कि if the problem comes. Hello, Jai Guruji. Jai Guruji. Aunty. Jai Guruji Kamlesh Mehta Aunty. Jai Guruji uncle, can you hear me? Yes, you are audible. Aunty, we can hear you. Yeah. Okay. I would like to read something, tell something. It always happens to the auntie, the Abhi, Seema Aunty. There's some questions to Seema Auntie's answers. It always happens once in a lifetime when we go through the deepest pain, unimaginable situation in our life. At that time, we feel that our life is completely falling apart and nothing is going to change. For a moment, it feels like there is nothing worth to live. We cry. Our souls scream. We ask Guruji how this could be happen to us. Why me? Here Guruji listen to our longings, heart, and keeps us giving respite to us in various forms. Maybe in the form of soulful friends, inspiring people, by reviving our inner strength, by making us closer to Him, by giving us right directions. At the end of the day, everything gets all in its place. Whenever we start feeling that whatever happened was good for a journey,
It makes us learn the hard lessons of life. It makes us stronger to enlighten our souls. It makes us learn the reality of people, and by sending the right ones to our life, where we could understand that why it never worked out without anyone else. Keep going, keep learning. Just rest assured that everything is going to be perfectly fine. It's just the process. The Guruji will bring you out of it as a shining soul. Now, what is Guruji? Sadguru. The first, let's look at the word Sadguru. Sat means truth, and Guru, a combination of the Latin words. Gu means darkness and Guru means light. So Satguru means bringing humanity from darkness to light through truth, or simply the true master. Since times immemorial, the true master has always been there in every age of human evolution. Whether he was known as the Satguru to the world or Guruji was up to him. But he has always been there, watching, living, teaching at the times of dispute or the descent of the humanity to the despite, hatred, war. Guruji revealed himself and once again set us upon the path of trust, showing us how to live as true human beings through stories and teachings and by example. So how do you know who is Guruji? Because there are so many gurus out there. People are confused as who is the true Guru. One of the findings, the Guru is how he portrays himself. When looking at the Guruji, talking to him, listening to him, what do we all feel? One can say that when they come into his presence, they feel sense bliss. That when they talk to him, they see him as a humble, kind, tolerant, living, peaceful, and many other attributes. That when they listen to him, when we listen to Guruji, the knowledge of God is given freely. And when they see him working, that he is a devoted God and his followers. He also teaches the value of you. What I mean by this is that he teaches us how to worship each, and by doing that, we are worshiping Guruji. Because Guruji is there in every satsang in the world, he has given us common place, his place upon the stage. And that is why my Guruji's humility, kindness, patience, tolerance, devotion, and love is always there. Now, another Guru ki nadar and name. Guruji gives us seva to curb our ego, to learn nivapan, and to be slaves of his slaves. He sometimes gives us the power to test whether we take right decisions and become his medium to spread love and happiness, or we use that power
to take out a personal grudge, to insult others, or to create new issues all the time to satisfy our ego. This circle of seva and power is Leela. We should take it as a key to heaven and to use it wisely. We should try to do seva with Simran and think thrice before taking any action. If we pass in this test of taking right decisions, thinking all the time that he is watching us with his nadar and meher, will be endless. Be a humble and a kind sevadar of Guruji. You have no idea that Sangat is coming to Guruji because they are suffering in many ways. So be a medium to connect the Sangat with our divine Lord Guruji. Try to forgive and forget. Never hurt anyone in ignorance also. So I end here. I hope Aunty Ji must have got lots of answers through this. And thank you so much. Guruji bless you all. Jai Guruji. Thank you, Kamlesh Aunty Ji. Your words are like, they are like gems, the written word as well as what you have spoken today. We will be reading and we will be listening to you again and again to really understand the roadmap that Guruji has given to us, and you have so kindly, showing us the way. I thank thank you very much from the bottom of my heart. I thank the reader for today's chapter, Seema Malik Aunty, also Seema Kumar Aunty. I thank organizers, Suresh Uncle and Nilima Aunty, who does a lot of work tirelessly behind the scenes. I thank the admin and all the supporters of this platform of Shukrana Guruji Multilingual. And thank you everyone, Sangat Ji, for being here, and we are so blessed today. We had a very good session. Over to you, Suresh Uncle Ji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thanks once again, Seema Malik Aunty, Seema Kumar Aunty, Kamlesh Mehta Aunty Ji, and I'll be requesting Kamlesh Mehta Aunty Ji to be participate regularly in future sessions, please, because we were not able to witness their presence during last 4 sessions. And yes, Sangat is also demoralized. So I'll be requesting again Kamlesh Mehta Aunty Ji to be regular in future sessions, please. With this, I'll be requesting host to take Agya from Guruji Maharaj.